सकता है अभिजीत डे स्टडी करे, ओके, हो सकता है अभिजीत सिर्फ गो थ्रू करे, एक बार सिर्फ थ्योरी पार्ट करे, प्रोग्रामेटिकल पार्ट ना कवर करे, हो सकता है आदित्य सिर्फ प्रोग्रामेटिकल पार्ट कवर करे, थ्योरी ना कवर करे. So that is a thing here, okay. Coming together to reflect on our observations help us synthesize and analyze findings, building a more nuanced understanding of the users across the team. What is happening actually here? See, क्या बोला यहाँ पे, that coming together to reflect, of course, if they both will just do the group study, then what will happen? Their perspectives will help each another, okay. Their perspectives will help to analyze the solutions, to analyze any problem, to find the solution of any problem. Let's suppose Abhijit is having a problem in his programmatical part, like he is not much clear about the programmatical parts. So what will happen? If Abhijit and Aditya will do the group study, so Aditya can help Abhijit to go through with the programmatical parts. Similarly, if Aditya does not like, I can say, theory part, so Aditya can help, sorry, Abhijit can help Aditya for that particular thing, okay. So that is the only thing said here, that whenever we are in a group, okay, when we are just working together, so our perspectives, our observations help us, even help our organization to synthesize and analyze the problem, to find the solution. Fine. So reflecting is about converging on the point of view, good decisions being with an understanding of your situation, your purpose, and how you make your difference for your users. Means what is actually said here, that जो भी हम लोगों का रिफ्लेक्शन होता है, जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, that totally depends on our understanding, okay. Understanding plus our purpose, कि हमारा purpose क्या है, are we going to have positive purpose for the work, or are we going to have a negative purpose for the work? So each and everything, our decision is totally based on our understanding, our purpose, and it will also get distinguished that how we are thinking from the other person, okay. Now, as the project progresses, we are constantly taking in new information. Observing generates fresh data about the real world. Let's suppose any of the application, okay. Let's suppose we talk about Google Pay, okay. Of course, the project, I can say that Google Pay is a project for the organization, for the Google, okay. So they are constantly in a progress form. Of course, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अगर पर्सन गूगल पे यूज कर रहा है तो वो उसको एक बार यूज करके स्टॉप कर देंगे, नो, ओके. अगर एक पर्सन स्टॉप भी करता है तो सिमिलरली एट द सेम मोमेंट 3 पर्सन अपने गूगल पे अकाउंट बनाते भी हैं. तो ये क्या है, एक इनका प्रोग्रेस ही हो रही है इनके प्रोजेक्ट पे. तो क्या होगा यहाँ पे, एज द प्रोजेक्ट गेट प्रोग्रेस्ड, we are constantly taking in new information. We means the organization. Of course, they are getting the new information. How they are getting the new information? If people get check in, or if people log in or just create their account in the Google Pay, they get the information. They are able to calculate, or they are able to get some data, okay. So that is the same thing here. Observing generates fresh data about the real world, while making generates new idea and opportunity to pursue. But as this information reveals the complexity of your problem space, it's easy to get overwhelmed, drift out of alignment, and lose sight of the mission we set to accomplish together. Means actually what is said here, let me just try to change it in a normal way. It is just said here that whenever we get some ideas, whenever we get some kind of opportunity, new opportunities, new ideas, okay, the information, whatever the information we get, the information try to resolve the complexity. Information क्या करेगी, information आपकी जो भी problem है, उस problem की complexity को reduce करने की कोशिश करेगी. पहले तो reveal करेगी, reveal करने के बाद reduce करने की कोशिश करेगी. Fine. So that जो भी आप लोगों का particular target है, particular mission है, वो आप लोग accomplish कर पाओ, आप वो लोग वो particular target achieve कर पाओ. Fine. Therefore, it's important to regularly reflect as a team. Of course, that's why if you want to get a good growth in the organization for yourself as well as for your organization, you must work in a reflection. You must work in a team. You must work in a collaboration. So reflecting brings your team together to synchronize your movement, synthesize what you have learned, and share your movements with each other. Means what happened here, actually what is said here, that you must work together so that you can do what? You can have a good movements, you can have a good growth, you can just learn each and everything. Of course, whenever we are working with any organization, we get to know many more things. Okay.
If I'm working with 7 persons, it is pretty sure that I'm going to learn 2 or 3 new things from them. Okay. If I'm working individually, I know very well that I'm not going to learn any of the things. Okay. So that is just said here. If the situation has changed, it is also a time to rethink what you want to move forward. Okay. Now then we have, when reflecting, have an empathy to understand diverse perspectives, the flexibility to reduce the change, and the integrity to stay true to your team values. Of course, if I talk about reflection, reflection does provide us the understanding of the different perspectives. Different perspectives can be your perspective of your organization, perspectives of your normal person's life, okay? And it provides you the different way that how you have to respond. Like आप लोगों को ये बताता है कि आपको different perspectives के साथ कैसे respond करना है. अगर कोई happiest moment है तो you must be look happier. और कोई saddest moment है तो you must be look sad. Okay? If any kind of confusion is there, you must try to like if any kind of movement there for the persons they are totally confused, so you should try to resolve that particular problem. Even don't try to get yourself as a confused one, but you should try that how you can overcome that particular confusion, right? And be honest about what you know and be open to what you hear, positive or negative. It isn't easy to get started, but you reflect regularly, the feedback you receive will rise you the best ideas. Of course, हम लोगों को जो भी हम लोग अचीव करते हैं, जो भी हम लोग आई कैन से हम लोग गो थ्रू करते हैं, हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो भी लर्न करते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस दैट हाउ वी टेक दोज पॉइंट्स. अगर पॉजिटिव पॉइंट्स है तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स को कैसे ले रहे हैं, अगर नेगेटिव पॉइंट्स है तो क्या वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. फाइन. Now, further in this, we have get to know each other. Get to know each other is totally reflected your organization, totally reflected your collaboration, or totally reflected your team. So, cultivate a common identity by discovering what unites you as a team. Of course, हम लोगों को जब भी हम कोई टीम में वर्क करते हैं, we should know that हम लोगों के पास क्या common identity है. Okay? Why we are working in a team? Get to know each other as possible and build empathy with them as you would with your users. Of course, if we are not open and if we are not comfortable with our colleagues, with our teammates, we are not open to them, what will happen? हम लोग users के साथ भी interact नहीं कर पाएंगे. Fine. Take stock of diversity of perspectives, acknowledge everyone's strengths, and think of your own limitations as an opportunity for others to shine. Okay, means we should see that what are our limitations, what is our low points, so that we can rise those points and we can shine within the others also. Fine. Next we have alignment of intent. Students, आप लोगों को ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है. लाइक रिफ्लेक्ट के अंदर गेट टू नो ईच अदर, लाइन ऑन इंटेंट, अनकवर न्यू इनसाइट्स, प्लान अहेड. फाइन. प्लीज इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को मत भूलना. Then next we have align of intent. If I talk about align of intent, students, see here. If you find yourself drifting out of alignment, slow down and examine the intent and motivations behind your work. For example, क्या होता है, कई बार हम लोग demotivate हो जाते हैं. Okay, sometimes such people are there in our environment that they try to demotivate ourselves. Okay, demotivates us. So what will happen? Demotivate हो जाएंगे, we will stop working on that. We will stop our motivations. So we should not do that. We should think about, if we get demotivated, we should think about that, and we should think about the positive points. We should think about the motivations also. Even we are demotivated, but हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि उस काम को करने के लिए हमें motivation कहाँ से मिली थी. Fine, so that we can work further if that particular work is good for us. Okay. Come to the common understanding of the users, the problem you are solving, and the outcome you are working to achieve together. Fine. Take stock of work you are doing and make sure it's aligned with your team big picture mission. Clear? Next, we have the point that uncover new insights. In this point, let's see what is happening as you take in a new information. Okay, take stock of what you know and what you don't know. Okay, if we want to learn anything, students, we should know कि हमें क्या पता है और हमें क्या नहीं पता. जो भी हमें पता है क्या we are good in that, या फिर
I can say we are just in an average level. We should check all such things. So synthesize your knowledge to uncover hidden insight that eliminates the path forward. Fine. An insight isn't restarting an observation, it's a leap of clarity, reframing your point of view and changing your convictions about what's important. Means what is said, I guess what is said here. Synthesize your knowledge to uncover hidden insights that eliminates the path forward. Means you should try to synthesize your knowledge. You should try to explore yourself so that you can get to know that these are the good path for you. Okay. If we don't try to explore ourselves, we are just, हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पर्सन को देख के उसी पाथ पे चल पड़ेंगे. Whether that path is good for us or not, we don't know. But हम लोग एक दूसरे को देख के उसी पाथ पे कंटिन्यू कर देंगे. So rather than doing that, we should uncover ourselves, we should discover ourselves, or we should explore ourselves so that we can eliminate the forward path for us, which is a good one. The insight isn't restarting the observation, and further we have to observe also. Fine. Then we have plan ahead. जब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सी हम लोगों ने अपने टीममेट्स को देख लिया. ओके, टीममेट्स देखने के बाद we are done with the motivation. अगर like we should work for that particular mission so that that particular mission will achieve. We should have the right alignment over that. Now we should try to uncover ourselves. Like if we have a good ideas related to that particular project, we should try to uncover them. We should try to discuss with the other persons also. Okay, and we should also think about that, are we working good or not? Are we on the point or not? If not, what is the new thing that I have to learn? So try to learn that thing also. Once you are done with that, let's plan ahead. If your understanding evolves, once you are done with your understanding, once you are done with that, your all points, don't move forward blindly. ऐसा नहीं है चलो जी अब शुरू हो जाओ. No, you should take step by step procedure. Okay, decide together on your next move. Means आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये डिस्कवर करना होता है, ये डिस्कस करना होता है कि हाँ जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा. मीन्स आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है. डोंट प्रोसीड फर्दर इंडिविजुअली इन योर प्रोजेक्ट. You can either take another loop or put a stake in the ground and commit to the idea. Whatever you decide, make sure you will all clear what you are doing next. Okay, so see student, what is said here, like आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्या steps proceed कर रहे हो. Okay, once you know very well that हाँ जी आप ये steps proceed कर रहे हो, that should be clear to your teammates also. Okay, once you are done with that, make sure आप लोगों को अपने further steps भी पता हो, और वो further steps कैसे होंगे आप लोगों के लिए clear होने चाहिए. आप लोगों के ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को जो work है, आप जो achieve करने वाले हो, उसके लिए कोई problem create कर रहे हो. Clear? तो ये points है हमारे पास reflect में. Okay, now we have one of the exercise inside the reflect. Let's discuss that exercise and then we will continue with that. We have two exercises actually here. Okay, so let's cover those two exercises and then we will cover, just wait, अच्छा ये भी तो है need statements. Let's discuss the problems that we have here. Okay, the first exercise that we have in a reflect is big idea dignities. See here what we have in this problem, or I can say exercise. Take time your team, anytime your team gets stuck or you feel that's better way to do something. Everyone has ideas. Don't make the mistake of leaving idea generation only to the designers, the engineers, the project owners, or the objectives. Everyone has a unique perspective on the user and the problem, so everyone should contribute ideas for solution. Okay, let's see what we have in this problem. Means big ideas, dignities. Big idea dignities means let's try to resolve the big ideas. Means we should explore ourselves and we should make sure that our ideas are much better and they should work in a positive way. So यहाँ पे सिंपल सी बात की कि अगर आपकी टीम स्टक हो जाए या फिर आप ऐसा सोचो कि ये वाला जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है इट्स नॉट गुड, वो सेकंड वाला पाथ या फिर सेकंड वाला आइडिया बहुत अच्छा था, बेटर था, तो क्या होगा. सी अब सबके पास अपने अपने आइडियाज हैं. ओके, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ लीविंग आइडिया जनरेशन ओनली टू द डिजाइनर्स. ओके, मेक श्योर स्टूडेंट्स हमेशा डिजाइनर्स ही या इंजीनियर्स ही या प्रोजेक्ट ओनर या एग्जीक्यूटिव वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आइडियाज जनरेट करने के लिए. आइडियाज जनरेशन के लिए टेस्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे,
We have our developers भी responsible है. If we have any quality assurance team, then quality assurance team भी responsible है. If we have any other persons related to our project like stakeholders, shareholders, user, client, all persons जो भी उस project से linked है, each and everyone have equal rights to give their points, and each and everyone have equal rights to think about the project. They are allowed to think about the project also, they are allowed to give their points also. Okay, it's because of democratic point. Now everyone has unique perspective, as I said, सबके पास अपने अपने points होते हैं, सबके पास अपने unique perspectives होते हैं. उसके behalf से क्या होगा? You are able to contribute good ideas for the solutions. Fine? इतना clear है सबको? Next हमारे पास है instructions. अब we have instructions related to the big idea dignities. Let's see what we have. The first one is set up the prompt. Okay, means we are going to work further with as a scenario map. So let's set up the prompt. Prompt क्या है? Let's see. Begin the activity with a good prompt, such as need statement, a user story, a hill, or just a pain point identified in an as scenario map. Fine. So means हमें क्या करना होगा? We should have a good prompt. Means हमारे पास जो idea है, वो ideas अच्छे होने चाहिए. It can be any statement. It can be user story. Means कोई भी statement हो सकती है, कोई भी user की आप user की story ले सकते हो, या फिर कोई भी आप further story ले सकते हो as a scenario map से. Okay. Now आपको करना क्या है? Write this prompt somewhere everyone can see it. Okay. You have to discuss those points, और आपको उस point वो जो particular prompt है, like यहाँ पे एक prompt दिया हमारे पास, developers need a way to interact with their own design team so that they can prototype faster. Fine. तो ये एक point दिया है, this is a prompt. आप लोगों को यहाँ पे ये prompt ऐसी जगह display करना है जहाँ पे सब दे सकते हैं. Of course, we have our Moodle. So अगर हमारे पास Moodle के पेज पे लिंक है, so we can allow this prompt on a Moodle. Fine. या फिर अगर मैं Moodle की बात ना करूँ स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम बात करें चार्ट्स वगैरह की. ओके, तो हम चार्ट्स वगैरह पे कैसे करते हैं इसे? ओके, हम लोगों को चार्ट्स वगैरह पे बनाना है. Moodle तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ही ना होते तो क्या हम डिजाइन थिंकिंग करते ही नहीं? नो, वी आर एबल टू परफॉर्म डिजाइन थिंकिंग. हम लोग क्या करते हैं? स्टिकी नोट्स, चार्ट्स, इन सब का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया कि इस प्रॉम्प्ट को आपको डिस्प्ले करना है. सो लेट्स सपोज Moodle हम लोग कहाँ प्रॉम्प्ट डिजाइन करेंगे? फर्स्ट नोटिस बोर्ड पे. फाइन, नोटिस बोर्ड पे यही होता था ना, एक नोटिस लिखते थे हम लोग स्कूल टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे हम नोटिस लिखते हैं. सिमिलरली ये एक प्रॉम्प्ट है जो सबको शो करवाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको नोटिस बोर्ड पे अटैच. Once we are done with that, once we are done with the prompt, setting of the prompt, we will work with the generate ideas, not features. We will continue that how we can generate ideas. Now students see, a big idea describes the experience a user might have the solution. Okay, means what is said here actually, the big idea describes the experience. Like let's suppose we have one of the solution, and if we have persons which are experienced one, they might have the solution with that particular problem. Okay, so feature describes the implementation of the solution. If you find that your ideas are starting to depict features, try using metaphor. It's a kind of like, can anyone tell me what is metaphor? हम लोगों ने metaphor उस दिन भी discuss किया था. What is metaphor? Yes students, what is metaphor? Tell me fast, metaphor क्या है? Yes, what is metaphor? Answer me fast. जब तक metaphor नहीं बताओगे मैं आगे कंटिन्यू नहीं करवाऊंगी. Figure of speech that is used to make a comparison between two things that aren't like but do have something in common. It's design which helps the user to understand the design easily. Okay. Anyone else? Yes, anyone else?
85 पार्टिसिपेंट्स हैं, 83 स्टूडेंट्स, चलो 84 हो गए, 82 स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। इन डायरेक्ट कंपैरिजन what about others? हाँ जी, what about others? नहीं पता। Metaphor, in a simple language, I can say that these are the kind of your design. Express your ideas using symbol, right, Akshay? Okay, that one thing is another thing. Okay, yeah. See, I can say it's a kind of your design, fine, which is used to express your ideas using some particular symbol. Let's suppose here you can see this is your metaphor. यहाँ पे एक सिंबल यूज किया है, सिंबल का यूज करके आप लोगों को एक आइडिया बताने की कोशिश की गई है. सो दिस इज योर मेटाफोर. ओके, सो स्टूडेंट्स मेटाफोर ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से point. Fine, it can be asked anywhere that what is the meaning of metaphor. So metaphor, I can say it's a symbol that is used to describe some point, that is used to describe some ideas. Fine. So whenever we are generating our ideas, what we are doing, we are trying to use metaphor. अब हम मेटाफर यूज क्यों करते हैं? मेटाफर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी हमारे आइडियाज हैं वो हम लोग इजीली बता सके. फाइन. और उन आइडियाज को हमारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, यूजर्स, क्लाइंट्स, whosoever we have, they are able to judge it properly, they are able to understand it properly. Okay, then we have diverge. अब diverge में क्या है हमारे पास? create many big ideas and quickly share them with each other. जैसे हमारे पास क्या होता है, जीडीपी होती है, हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, हम लोग किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड एट अ सिंगल टाइम थिंकिंग करते हैं, हम उससे रिलेटेड अपने आइडियाज जनरेट करते हैं और उनको क्विकली शेयर करते हैं. ठीक है, ये होता है ना रैंडम आइडिया जो भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं उस पॉइंट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग वो जनरेट करते हैं और वो शेयर करते हैं. तो सेम थिंग वी हैव सेड हियर. सो बिल्ड ऑफ अदर्स idea but stay out of the weeds, of avoid drifting into features or talking about implementation details. What we should do, we should try to understand each and every one. At least we should try that. We should be clear about the points of ourselves, means whatever the points we have just discussed, even we should be clear about the points of other also, कि बाकी सबने points क्या discuss किए हैं. Fine, but we should stay out of the weeds, means जो अनवांटेड पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट्स को ध्यान समझना, मींस वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, जो अनवांटेड पॉइंट्स है, जो वी शुड बी अवॉइड सच पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को आप लोग ट्राई करो, आप लोग ड्रिफ्ट आउट ही करो. ओके, एंड डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज पर्टिकुलर आइडियाज इनटू योर प्रोजेक्ट. फाइन, क्लियर? सो हियर वी हैव वन ऑफ द वे दैट दिस इज आवर प्रॉम्प्ट. ये हमारा प्रॉम्प्ट था. प्रॉम्प्ट से रिलेटेड फिर हम लोगों ने अपने आइडियाज जनरेट कर लिए. जो भी हमारा टॉपिक था हमने उससे रिलेटेड पहले प्रॉम्प्ट डिजाइन किया, उससे रिलेटेड फिर हमने अपने आइडियाज जनरेट कर लिए और स्टिकी नोट्स के थ्रू उन्हें पेस्ट कर दिया. देन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू क्लस्टर देम, वी हैव टू गिव टाइटल एंड वी हैव टू डिस्कस ओवर देम. So look at the similar ideas and natural affinities, move them physically closer together as you do. Name the cluster, identify any cluster or individual ideas that stand out, converge on the set that you would want to advance. क्या होगा? Let's suppose यहाँ पे देखो रेड यहाँ है, येलो यहाँ है. अब हमें क्या करना है, हम लोगों को तो क्लस्टरिंग करनी है. तो हम क्लस्टरिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो भी पॉइंट्स हमें लगता है कि ये सिमिलर है, वी शुड मूव टुगेदर, हम उनको क्लोजर लेकर आएंगे और उनको हाईलाइट करेंगे. जैसे ये पॉइंट्स है, हमें लगता है ये दोनों पॉइंट सेम है, तो इन्हें क्लोज लेकर आए. देखो कितनी दूर थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, तो हमने क्या किया, उनको क्लोज लेकर आए. ओके, क्लोज लेकर आने के बाद उनको हाईलाइट किया और उनको एक नेम दे दिया. जैसे यहाँ पे बोला था नेम द क्लस्टर, नेम दे दिया, दैट इज कम्युनिकेशन. सिमिलरली ये दोनों पॉइंट्स आपको सेम लगते हैं तो आपने उनको हाईलाइट किया और उसको नेम दे दिया ट्रांसलेशन.
फाइन। सो ये हमारे पास स्टेप्स थे हमारे इसमें बिग आइडिया विग्निटीज में। फाइन, तो ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद एक्सरसाइज है, लेट्स सी दैट वन। वी हैव प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। Let's see what we have in the prioritization grid. While prioritization is most helpful at the beginning of the project, प्रायोरिटीज की बात की जाए तो अगर यस आप हर एक चीज को प्रायोरिटी देते हो, प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड में भी हमारे पास सेम ही कंसेप्ट है कि हम लोग प्रायोरिटीज देंगे। और जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हर एक मॉड्यूल की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। सो आपका प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लोग स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू करते हो, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि आप मॉड्यूल्स की प्रायोरिटीज डिस्कस करते हो वहाँ पे कि हाँ जी इस मॉड्यूल की इतनी प्रायोरिटी, इस मॉड्यूल की इतनी प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन मॉड्यूल की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, सिमिलरली लॉगआउट मॉड्यूल की भी प्रायोरिटी है। ठीक है, ओके। सेम अदर्स आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गए और आपके पास पेजेस हो जाएंगे, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। It's also worth taking time to prioritize before an iteration or sprint. Okay, means जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर फेज से नेक्स्ट फेज में जाने के लिए कोशिश करोगे, you should worth taking time to prioritize. Means you should think कि हाँ जी इसकी प्रायोरिटी सही है या नहीं है। Means you should think about the priorities also once you are moving to the next step. You can use this activity to prioritize anything from ideas generated in big idea vigneties to user story in the backlog. क्या होगा, जो भी आप लोगों के बिग आइडिया विग्निटीज में से आप लोगों ने जनरेट किए आइडियाज, उन आइडियाज को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो आप प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड में। ओके, तो आइडियाज जनरेट हो चुके थे, तो ऑलरेडी हमारे पास आइडियाज जनरेटेड है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए सेट कि हम बिग आइडिया विग्निटीज के स्टेप्स को यूज करेंगे, उसी के आइडियाज जो जनरेटेड है उन्हीं को यूज करेंगे। सो कम प्रिपेयर्ड विद आइडियाज, तो आइडियाज जनरेटेड है आप लोगों के पास, तो लेट्स वर्क फर्दर। तो प्रायोरिटाइजेशन इज ओनली वैल्यूएबल एज आइडियाज यू ब्रिंग टू द टेबल। जो भी आप लोगों के आइडियाज जनरेटेड हैं, यू आर गोइंग टू मार्क देम इन अ प्रॉपर टेबल, यू आर गोइंग टू जस्ट आई कैन से ट्राई टू मैनेज देम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटाइजेशन। So make sure that you have a strong set of ideas to prioritize. For example, from big idea vigneties activity or user stories in your backlog. Means क्या बोला गया है कि like जो भी आप अपने points यहाँ पे add on कर रहे हो इस फर्स्ट स्टेप में, जो भी आप अपने वैल्यूज एड ऑन कर रहे हो, वैल्यूज बोल सकते हो, पॉइंट्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आई कैन से आइडियाज, नंबर आइडियाज ही बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज या आइडियाज, जो भी आप लोगों के वैल्यूज और आइडियाज है, दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ओके, दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड दैट मस्ट बी गुड प्रायोरिटाइज सो दैट यू कैन कंटिन्यू फर्दर। ओके, नाउ कंटिन्यू फर्दर में मीन्स आप करोगे क्या, लेट्स सी दिस वन। ये हमारा लास्ट स्टेप किसका था, ऑफ कोर्स ये हमारे पास बिग आइडिया विग्निटीज का लास्ट स्टेप था, जहां आपने क्लस्टर किया था। तो ये इट विल वर्क लाइक अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर कम प्रिपेयर्ड विद आइडियाज। कम प्रिपेयर्ड विद आइडियाज में फर्स्ट स्टेप की तरह काम करेगा, और सेकंड स्टेप में आपके पास आ जाएगा सेटअप द एक्टिविटी। सो हमारे पास ये पॉइंट्स तो बने ही हैं, अब हमने इसके ऊपर काम करना है। ऑन योर व्हाइट बोर्ड, लार्ज स्टिकी पैड or virtual whiteboard, draw two axes, importance to the user, having low to high, and feasibility for the team, difficult to easy. Let's see क्या बोला गया है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो आप लोगों के पास दिस वन इज योर वाई, तो वाई में क्या रखना है आप लोगों को, वाई में लेना है आपको वैल्यू टू यूजर विच मस्ट बी फ्रॉम हाई टू लोअर, और फिजिबिलिटी फॉर द टीम ये आपको एक्स एक्सिस में देना है लो टू हाई। तो यहाँ पे वही बात की गई है, जब आपको किसी भी एक्टिविटी का सेटअप करना है तो आप लोगों को क्या करना है, एक व्हाइट बोर्ड पे या एक स्टिकी नोट पे या वर्चुअल बोर्ड पे, या फिर आपको क्या करना है, दो एक्सिस क्रिएट करनी है। तो आपने ये एक्सिस क्रिएट कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपने उनको पर्टिकुलरली जो भी डिमांड थी हमारी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको सेट कर दिया। लाइक जो आपकी वाई एक्सिस है आपने वैल्यू टू यूजर को दे दी, जो एक्स एक्सिस है वो फिजिबिलिटी फॉर द टीम को दे दी, है भी लो टू हाई, ये भी लो टू, ये भी सॉरी ये भी हाई टू लो, ये भी हाई टू लो। फाइन, नेक्स्ट once we are done with this one we have to evaluate ideas. like यहाँ से आप लोगों को अपने आइडियाज पिक करने हैं और अपने आइडियाज को इस पर्टिकुलर आई कैन से एक्सिस में सेट करने हैं। सो have everyone quickly evaluate each idea on their own and roughly plot them on the grid. मीन्स आप अपने आइडियाज को फेच करो वहां से और क्विकली यहाँ पे प्लॉट कर दो कि लाइक
अगर वैल्यू टू यूजर में आपको लगता है ये पॉइंट हाई है तो हाई में, अगर वैल्यू टू यूजर में आपको लगता है पॉइंट मिड में है तो मिड में, अगर आपको लगता है वैल्यू टू हाई में ये पॉइंट लो में है तो लो में। सिमिलरली फिजिबिलिटी फॉर टीम में आपको लगता है ये पॉइंट हाई में है तो यहाँ पे, अगर आपको फिजिबिलिटी फॉर द टीम और वैल्यू टू द यूजर हाई लगता है तो यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे। जिस भी अकॉर्डिंग आप लोगों को पॉइंट सेट सही लगता है, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, यू थिंक्स की पॉइंट परफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे यहाँ पे आई कैन से ग्राफ में आप अलॉट कर दोगे, ठीक है। देन फोकस द डिस्कशंस, हम लोग क्या करेंगे अपने डिस्कशन पे फोकस करेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेंट है यहाँ पे ये वाला, लेबल द अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट नो ब्रेनर्स। लेट्स सी नो ब्रेनर्स, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये नो ब्रेनर्स के लिए कर दिया, ठीक है। बिग बेट्स के लिए ये वाला कर दिया, यूटिलिटीज के लिए वाला कर दिया, अनवाइज कर दिया। कैसे कैसे किया, लेट्स सी। लेबल द अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट नो ब्रेनर्स, the center right area utilities, and the center top area big bets. Focus the discussion around big bets, mid feasibility. High important ideas can reflect significant investment with potentially big payouts. Okay, तो क्या है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि आप लोगों को करना क्या है। जो आप लोगों का ये वाला एरिया है, ठीक है, आप लोगों ने जो पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, उसका जो सबसे टॉप वाला एरिया होगा, टॉप वाला एरिया कौन सा वाला, सी सेंटर टॉप एरिया, आप सॉरी सेंटर राइट एरिया, ठीक है, उसको आप कैसे दोगे, उसको आप यूटिलिटीज के थ्रू मेंशन करोगे। ये सेंटर राइट एरिया तो आप उसको यूटिलिटीज के थ्रू मेंशन करोगे। देन जो राइट हैंड क्वाड्रेंट है, ये वाला आपका राइट हैंड क्वाड्रेंट होगा, ये आप लोगों को नो ब्रेनर्स के थ्रू मेंशन करोगे। जहां पे आप लोगों ने यूटिलिटीज मेंशन की है उसी का टॉप एरिया, सेंटर टॉप एरिया, आप उसको बिग बेट्स दोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप ये पॉइंट्स मेंशन तो कर रहे हो, बिग बेट्स, नो ब्रेनर्स, यूटिलिटीज, ये जरूरी नहीं एज इट इज रखना है, ये तो इसके एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है हम चेक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग दिया है। लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, आप एक कैब फैसिलिटी हम ले रहे थे वापस, आप एक कैब फैसिलिटी को डिस्कस कर रहे हो, तो कैब फैसिलिटी जब आप डिस्कस करोगे तो आप यहाँ पे पॉइंट कर सकते हो दैट दिस वन इज फॉर द एम्प्लॉय, ओके, और आई कैन से फॉर द ड्राइवर, या फिर हाईली पेड। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट ओला, ओला में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपके पास सर्विसेज मिलती है हमें, ठीक है। लाइक वी हैव मिनी, वी हैव आई थिंक सो वी हैव एक्सेल आल्सो, ओके, मींस कार के साइज के अकॉर्डिंग 6 पर्सन सीटर होती है, 4 पर्सन सीटर्स होती है, तो सेम थिंग। लेट्स सपोज वी गॉट पॉइंट फॉर द 6 पर्सन सीटर, तो यहाँ पे आप वो पॉइंट, अगर आपका यहाँ पे जो स्टिकी नोट है वो 6 पर्सन से रिलेटेड आपकी कार का है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो फॉर द हायर मॉड्यूल या फॉर द 6 पर्सन सीटर। सिमिलरली अगर ये आपके 4 पर्सन सीटर से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 4 पर्सन सीटर। लेट्स सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, आपके पास एक बिग बेट आई है, ठीक है, या बहुत ही यूज चैलेंज आया है आप लोगों की कैब फैसिलिटी में और वो आपका यहाँ प्लेस कर रहा है, देन यू कैन मार्क इट एज बिग चैलेंज, फाइन। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स को अपने अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है वैसे ही आप लोगों को अलॉट करना है, नो, you can allot those points, though you can allot those particular I can say quadrants according to your wish, according to your usability, according to your thinking, fine, clear। Now we have some take back tips here। Importance is important means आपको ये points अगर आप लोग दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। लाइक आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये फिजिबिलिटी के लिए है, ये नो ब्रेनर्स के लिए है। लेट्स सी तीनों चीजें जो यहाँ पे तीनों चारों उन्होंने क्वाड्रेंट्स में डिस्कस किया था ये है क्या। अगर मैं इम्पोर्टेंस इज इम्पोर्टेंट की बात करूं तो अवॉइड कंसीडरिंग ओनली व्हाट इज फिजिबल rather than what is feasible, what will have an important and market differentiating impact on the user। Like अगर मैं important point की बात करूं तो important point में उन्होंने क्या बोला, वो importance point में सॉरी, कि आप लोगों को वो points यहाँ पे fetch करने हैं which are totally different for the market, okay, which are important and have a higher demand or I can say which is having a higher impact to the user related to the market, fine। अब वहीं पे अगर मैं फिजिबिलिटी की बात करूं तो फिजिबिलिटी में क्या है, इन एडिशन टू द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। लेट्स सपोज हमारे पास टेक्निकल पर्सपेक्टिव है तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या बोलूंगी मैं कि फिजिबिलिटी आल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी एंड हेड काउंट कैपेसिटी। ओके, ऑफ कोर्स देखो हेड काउंट कैपेसिटी की बात करूं तो हेड काउंट कैपेसिटी आप किससे रिलेट कर सकते हो, कैब सर्विस से। कैसे कि आपके कितने सीटर है, ठीक है, तो कितना फिजिबल है आप लोगों की कार,
लाइक हो सकता है 6 सीटर हो सकता है वो 10 सीटर भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो सकता है या 12 सीटर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो सकता है आप मिनी बस प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द लॉन्ग आई कैन से इंटरसिटी ट्रैवल्स के लिए, ठीक है। तो सेम वो आप लोगों की फिजिबिलिटी पॉइंट ऐड ऑन होता है। No brainers are everywhere. Let's see this point also. Your competitors will also be focused on the things that are highly important and feasible. जो point सबसे ज्यादा important होंगे. Let's suppose आप लोगों के पास बहुत ज्यादा business आ रहा है. Whatever the business you have, you are getting a good growth in that. Of course, your competitors are going to see that. Okay, they will focus on your point that what you are doing in your business to make it on a higher level. Similarly, they will try also. Fine. So your competitors will also focus on the things that are highly important and feasible. So make sure your ideas must be good and must be attractive for yourself as well as for the others also. Okay. So instead focus on discussion on making utilities, make impactful and on making big bets more feasible. The same thing is just said here कि आप लोगों को अपने ideas इतने अच्छे generate करने हैं that I can say your points should be too much good. Your thinking or whatever the steps you have taken to get your business in the higher level that must be too much good कि वो पॉइंट्स औरों को भी हेल्प करे, जस्ट ना कि आप ही को हेल्प करे, आप लोगों के और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आपके वो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड ग्रुप ले रहा है, सेकंड टीम ले रही है, ओके, या कोई और टीएल आप लोगों के टीम लीडर्स वो आप लोगों की स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर रहा है तो वो उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव होना चाहिए। फाइन। तो इस तरीके से आप लोग अपने पॉइंट्स को यहाँ पे गेट करते हो। तो ये हमारे पास बिग आइडियाज थे इसमें, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड हो गया हमारे पास इसमें, देन वी हैव बिग आइडिया विग्नेटिस। वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन मोर एक्सरसाइज दैट वी हैव हियर इन द रिफ्लेक्ट, दैट इज नीड स्टेटमेंट। ओके, वंस वी आर डन विद द नीड स्टेटमेंट्स देन वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड पॉइंट दैट इज मेक। फिर हम लोग मेक में देख लेंगे हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, लाइक हियर वी हैव स्टोरी बोर्ड्स, हम स्टोरी बोर्ड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। Once we are done with that, we will continue with our next chapter, which is the key aligners. इसमें हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हिल्स क्या होता है, प्लेबैक्स क्या होता है, स्पॉन्सर यूजर्स क्या होता है। आप लोगों ने हिल्स वर्ड यहाँ पे सुना होगा, हम लोगों ने भी पीछे डिस्कस किया था। सो हिल्स वर्ड आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे कि हिल्स क्या होता है। फाइन, इज इट क्लियर? आई नो बहुत ज्यादा थ्योरी है, बट आप जैसे उसको पढ़ोगे एक बार, ऑफ कोर्स यू वांट टू बी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, एक बार पढ़ोगे ना बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी। मीन्स आप इफ यू विल स्टडी इट अकॉर्डिंग बाय रिलेटिंग इट विद योर डेली लाइफ, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। सो अगेन आई एम सेइंग, इसको पढ़ोगे जब भी, इसके लिए स्टडी करोगे, प्लीज इसे अपनी डेली लाइफ के साथ ही रिलेट करके पढ़ना, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। फिर अदरवाइज आप लोग थ्योरी पढ़ते जाओगे। यशाश्वी, आप लोगों को ये पीडीएफ मैंने बीबी पे डाल दिया डियर, ब्लैक बोर्ड पे सेम पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। ये है, कुछ पीपीटीज अपलोड कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, और ये मेन पूरी जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये वाली पीडीएफ, ये पीडीएफ वहां पे डली हुई है।